Hello students, welcome to RiceIce YouTube channel. I am Amit Kiran Chaudhary. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about the against battle against AI misinformations. The topic is related to AI generated content, misinformation, need for regulation in India. So basically in this article, the author said that कि जब AI related regulations हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे ला रहे हैं तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और उसके साथ साथ एक बैलेंस भी किया गया है। और इसका जो चैलेंजेस, पहले तो हम लोग सोचेंगे, जानेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला जो इसका जो लाइन्स है, तो उसमें वो चैलेंजेस के बारे में बोला गया। क्या क्या चैलेंजेस था, देखिए कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी क्या है, कि इतना अभी जैसे चैट जीपीटी के थ्रू, यहाँ पे लिखा गया चैट जीपीटी के थ्रू जो जो कंटेंट्स बन रहा है वो वैसा बन रहा है कि उसका क्रेडिबिलिटी नहीं रह रहा है। वो जैसे कि इसका इमेज जनरेट हुआ, उसके साथ इंफॉर्मेशन, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन इन पिक्चर्स। सो असल में क्या हो रहा है, उसका क्रेडिबिलिटी को घटा दे रहा है। देन इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्राइम, जैसे फेक न्यूज हो गया, कोई रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात हो गया, बा कोई किसी का नाम इस्तेमाल करके कोई कमेंट्स जनरेट कर दिया गया, कि बोला गया कि इसी ने ये कमेंट्स किया है, कि इसी ने ये पोस्ट डाला है, कि वो पोस्ट ही फेक है। तो इससे क्या हो रहा है कि दिस पॉज अ थ्रेट टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्राइम। एंड देन नेक्स्ट इज लीगल एंड जुडिशियल स्नैक्सिटी। ये क्या है, देखिए अब लिंक्डइन पे अगर जाते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स रहता है कि उन्होंने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया, उसका फास्ट पेज, एंड देन वो इंक्लूडेड कंक्लूड करते हैं कि आप इसके साथ जुड़िए रिसर्च में, वगैरह वगैरह। देन दिस इज टोटली फेक। ओके, sometimes this is totally fake. So ultimately it affects our the questions on legality, what we saw, what we get। हाँ, लीगलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है। देन इरोशन एंड पर्सनैलिटी राइट्स क्या है, कि जैसे रिसेंटली जो अमिताभ बच्चन का केस आया है, अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन का भी केस आया है, तो उन लोग का ये कहना था कोर्ट में कि उन लोगों का वॉइस इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों का जो आर्ट का कला है, जैसे करके वो लोग बिहेव करते, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो दिस क्रिएट अ पर्सनैलिटी राइट्स इश्यूज, इरोशंस ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स। देन डेमोग्राफिक ट्रस्ट डेफिसिट, अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, जब बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, जितने इन्फॉर्मेशन है उससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आर डंपिंग इन अवर सोशल मीडिया, इन अवर सराउंडिंग्स। ओके, सो व्हाट इज द consensus? Demography मतलब peoples are believing that these things may be misinformations, these things may be wrong informations. When government puts such a government delivers such a comments or advertisements, so they think that most of the people think that these things may be misinformations. Okay, so this created trust deficit in our society, in our populations. The next things we will see that रेगुलेटरी डिलेमा, क्या क्या डिलेमा क्रिएट हो रहा है। हम लोग एथिक्स पेपर में पढ़ते हैं कि डिलेमा क्रिएट हो रहा है। तो व्हाट इज द डिलेमा? डिलेमा इज ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी ट्रेड ऑफ। हम लोग को एआई पे ग्रोथ चाहिए। डू वी नीड्स ग्रोथ इन एआई? यस, बट वी नीड्स आल्सो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बिकॉज वी हैव एआई। जैसे मेटा का एआई हो गया, चैट जीपीटी से एआई हो गया, देन हम लोग अगर जी रॉक को यूज करते एक्स में, उसका एआई हो गया। तो वी नीड्स एआई ग्रोथ, but apart from that we need also safety of personality, right? Safety of our safety of our thoughts, our expressions। क्योंकि हम लोग पोस्ट करते कुछ और उसको डाइवर्ट करके हम लोग अपना बहुत ही एक सोशल बिहेवियर है कि हम लोग का सोशल मीडिया ऐप है, हम लोग पिक्चर पोस्ट करते हैं, लेकिन उसको डिस्टॉर्टेड करके क्या बनाया जा रहा है, कुछ दूसरा कुछ बना दिया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, पर्सनल राइट्स का हार्म हो रहा है, हम लोग को डिग्निटी पे सवाल आ रहा है। तो ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी जरूरी है। देन चिलिंग इफेक्ट ऑफ ओवर रेगुलेशंस। if we put over regulations on AI, so what is the impact on that? It restricts the growth of AI. First things they will do, and they create a disadvantage for our AI ecosystems. Global investors will not come in our country. They will not invest in our country. So these are the impacts. Then catastrophic cost of under regulation. If we do under regulate our AI ecosystems, then what will be the result? The result is misinformation surrounding us. There will be threat our internal securities and crimes. Then it will
threat our personality rights, erosions of our personality rights, and the conclusion is trust deficit. It will create trust deficit in our populations. So these are the dilemma. If there is a ethics questions on these things AI, so we can use this kind of dilemmas in our answers. And the next thing is India's current regulatory footprint, IT rules 2026. These are acts, okay, made by our parliaments. So what is this says? This saying that the rules formally define target synthetically generated informations. Means if we look at the Facebooks and Instagrams, we can see that if anything's created from something AI, so there will be a tagline that is AI generated. So the result, the cause is that this act made complementary, not complementary, that if we generated things from AI, there should be a mentions of AI generated. So we can identify what is the real things. We can identify what is human created, or we can distinct from AI creations. Okay, so these things also include deepfake, social cloning, and AI altered media hyperexcel takedowns. So ये जो चीज है डिफेक्ट्स, वॉइस क्लोनिंग, ये सबको टेक डाउन करने के लिए इसको इस्तेमाल इस एक्ट दिस एक्ट इज वेरी इफेक्टिव. एंड देन वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी डन इन दिस पैरा. दे सेड अबाउट वे फॉरवर्ड, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. देन देखा जाएगा कि enact dedicated legislations. We should enact dedicated legislations on AI. Then implement ethical baselines. We should implement a ethical baselines की क्या कितना दूर तक हम लोग एथिक्स का एआई में इस्तेमाल होगा, एक एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि इसके नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग इसके ऊपर ही काम करेंगे. देन इम्प्लीमेंट एथिकल बेसलाइंस हो गया. देन एस्टैब्लिश अ सॉवरेन रेगुलेटरी बॉडी. जो एआई को रेगुलेट करेगा, द बॉडी शुड बी अ सॉवरेन, कि नो वन कैन इंटरफेयर, no one can manipulate the process. Okay, so a sovereign body, a independent body can regulate and oversight the process, the AI ecosystem environment independently and biasless. Okay, so we need a sovereign regulatory body. Then cultivate public cognitive defense. This is the most important way forward for most of the challenging or concern related answer writing. Okay, what is public cognitive defense? This is simple term is public awareness, and the standard term is cultivate public cognitive defense. Okay, so public awareness is mandatory, because if we aware public common citizens that these things are from AI, these things can be, we should verify the contents, we should verify the informations, we shouldn't believe at a glance when things pop up in our phones. Okay, any feed things, when we scroll our feeds, so a lot of things are there, a lot of garbage are there, so should not believe on those things. We should re-verify once. We should visit our proper government websites like PIV. You know, PIV is very important in today's UPSC preparations, because 30 above questions are directly taken from PIV. So we should learn from PIV. So we should rely for current affairs preparation from PIVs. So okay, so cultivate public cognitive defense. So public awareness is important. So that's why we always say that newspaper reading is very essential. We should, if we verify anything, we should visit government's documents like PIV. So these things are very authentic. That's why we focus on the Hindu newspaper reading. That is the things. We should get a verified information. Okay. Then conclusions. In conclusions, we give them very short and exam-oriented, exam-ready conclusion to achieve Viksit Bharat 2047. This thing is very important. In this conclusions part, this is the key terms. Key terms. These are futuristic. Conclusion should be futuristic, informative. Viksit Bharat 2047. India must harmonize technological ambitions with digital safety. We need ambitions on AI. It needs ambitions on growth on technology,
And side by side, we also ensures the digital safety. Okay, by enforcing robust legislative uh, guardrails, ethical AI baselines, and proactive public literacy, the nation can lead global innovative while preserving institutional trust and truth. हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड ट्रूथ को भी संभल के रखेंगे, उसके साथ साथ दुनिया को नेतृत्व भी देंगे, लीडरशिप भी देंगे. जब ये आर्टिकल पूरा पढ़ना हो जाएगा ना, उसके बाद एक देखो कि क्वेश्चन मैंने दिया, मेंस का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. 15 मिनट्स टाइम लेके आप लोग घर में लिखिए और सबमिट इट्स इन आवर पोर्टल राइस आइस वेबसाइट्स. ओके, we'll evaluate it and then we'll give you the evaluations copy. Okay, so for further uh, for further current affairs preparation, please visit RiseEye's websites and RiseEye's YouTube channels. There we already some upload prelims bites and editorial explains, and all the things PDFs are there, informations are there in our website. So please visit it and prepare your current affairs. Prepare your current affairs very effectively. Okay. So all the best, students. Thank you.